Hello friends, welcome to ProTalent and this is our legal knowledge question module number 10. I'm sure you are enjoying this module with us wherein we cover 20 questions. So far we have covered total 9 modules. Okay, from 9th module we have picked up little you can say difficulty level. So initial जो आपके total जो 8 modules हैं they were reasonably basic and a moderate level. Now from 9 onwards they are on a tougher side and require detailed understanding about legal aspect. Okay, so I'm sure you will definitely enjoy this journey with me for this 20 questions. Let me start to talk about question number 1. So the question number 1 says that are international customs a source of international law or not? नाउ इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के जो भी सोर्सेज है सो दे आर बेसिकली जनरल प्रैक्टिस एंड कस्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, कोई पर्टिकुलर कोवेनेंट और एग्रीमेंट और एक तरीके से कन्वेंशन हो सकता है. ठीक है, या कोई तरीके से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो भी जनरल प्रिंसिपल चलते हैं वो चलेगा. सो हियर ऑप्शन नंबर 1 सेज यस दे आर सब्जेक्ट टू एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस. Yes, they are the international customs. They are source of international law. Number B talks about yes, they are subject to acceptance by ICJ. ICJ के acceptance से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे. It has to be an evidence of general practice in a particular area. Yes, they are subject to consent of nations in conflict. No, जो भी conflict में nation है उनसे पूछना पड़ेगा, वो जरूरी नहीं है. आंसर हो जाएगा आपका A. Coming to question number 2. What is dualism? Now this is very interesting. Now dualism is a concept of you can say running two different activities. Okay, they are not connected and possibly they may have an opposite effect. Okay, so that is called dualism. Okay, वापस समझते हैं what is dualism. Dualism का मतलब होता है two opposite work going hand in hand. That means a particular organization or particular institution having two different goals. Okay, अब देखते हैं नंबर 1 क्या बोलता है. टू टीयर सिस्टम ऑफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ. दिस आर द टू टीयर दैट्स नॉट अ ड्यूअलिज्म. ओके, टू टीयर है मतलब एक लेवल फिर दूसरा लेवल. अब दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सेम, common, and thereby you can say it is not a dualism का example. Number 2, theory recognizing international law and municipal law as distinct. ठीक है, म्यूनिसिपल लॉ अलग है और इंटरनेशनल लॉ अलग है. दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ ड्यूअलिज्म. Dualism means one organization having two different goals. So this is also not. Theory recognizing the international identity of a state as different from its sovereign authority. So our international identity of a nation is different from its sovereign authority. In fact, many times from a sovereign authority this identity of state comes into existence. So ये statement तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. Number D, operations of peacekeeping and peacemaking as exhibited by United Nations. Peacekeeping that means एक तरीके से लोगों को मदद करना, पीस फॉलो करवाना, और पीस मेकिंग है ना, तो वो दोनों में अलग है. पीस कीपिंग फोर्स होते हैं, पीस मेकिंग करवाना एक डिप्लोमेटिक वे में काम करवाना, डिप्लोमेटिक टाइज एंगेज करवाना. सो दैट वे आंसर वुड बी डी, दैट इज कॉल्ड ड्यूअलिज्म. सो हियर ड्यूअलिज्म मीन्स गोइंग बाय two different you can say roles. Okay, peacekeeping and peacemaking are two different roles of United Nations. Coming to question number 3, universal declaration of human rights is contained where? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार की बात हो रही है. मानवाधिकार की बातें आर्टिकल नंबर 68 ऑफ यूनाइटेड नेशन के चार्टर में देके रखा है क्लियर कट, और इसी की वजह से ह्यूमन राइट्स के जो भी पहलू है पूरे वर्ल्ड में वो सब कंट्रीज अलग अलग तरीके से अपनी तरीके से फॉलो करते हैं. सो दैट इज आर्टिकल नंबर 68 of UN Charter is what you should be
knowing. So फटाफट मुझे बताइए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बेसिस के ऊपर ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? ओके, कमिंग टू नंबर 4, इंटरनेशनल लॉ इज व्हाट? इट इज अ सॉफ्ट लॉ, पॉसिबल यस, ठीक है भाई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट लॉ? सॉफ्ट लॉ का मतलब होता है दैट इट इज नॉट रिजिड, it is not bounding on many countries, and more importantly it may possibly have law without a jurisdiction or law without a sanction. In the sense कोई लॉ बना दिया, अब लॉ को कोई इंप्लीमेंट करना है तो एक जुरिस्डिक्शन होगा. कोई भी सोवरेन नेशन अपनी मनमर्जी से बोल सकता है कि भैया आई डोंट बिलीव इन दिस पर्टिकुलर डिसीजन, सो दैट मीन्स दे डोंट हैव अ जुरिस्डिक्शन, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सैंक्शंस ऑन देम. मतलब कोई तरीके से उनके ऊपर सैंक्शन नहीं लगा सकते, उनके ऊपर पेनल्टी, कंडीशंस, फोर्सिबली कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उसको सॉफ्ट लॉ बोलते हैं. एंड दैट इज ऑल्सो राइट दैट इट इज लॉ विदाउट जुरिस्डिक्शन, इट इज लॉ विदाउट एनी सैंक्शन. सो आंसर क्या बन जाना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव. सो इंटरनेशनल लॉ अगर वैसे है तो फिर उसका यूज ही क्या है? भाई उसका यूज इसलिए है कि एक तरीके से एक मॉरल कंपास का काम करेगा. ठीक है, जब दो कंट्रीज के बीच में कभी डिस्प्यूट होगा तो उनको एक डायरेक्शन, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए कि किस तरीके से क्या चीजें इंप्लीमेंट करवा सकते हैं. सो इट इज अ सॉफ्ट लॉ, लॉ विदाउट जुरिस्डिक्शन एंड लॉ विदाउट एनी काइंड ऑफ सैंक्शन. नंबर 5, कैन फंडामेंटल राइट्स बी वेव्ड ऑफ? ओके, नाउ फंडामेंटल राइट्स को हम वेव ऑफ कर सकते हैं, मतलब हम उनको ध्यान में न रखें, हम उनको कंसिडर न करें, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं. फंडामेंटल राइट्स दे आर सुप्रीम, दे कैन नॉट बी waved off. Okay, so I'm sure you know that even during emergency, remember during emergency article number 20 and 21 cannot be suspended. आप कुछ भी कर लो वो आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे, मतलब वो कभी भी वेव ऑफ नहीं करे जाएंगे. ठीक है, सो दैट मीन्स आंसर क्या होना चाहिए? नो. बट एज पर व्हाट? एज पर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन बसवेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये पर्टिकुलर एक्ट में, ये पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम, दे कैन नॉट बी वेव्ड ऑफ फॉर एनी पर्पस, especially there is a possibility of reasonable restriction, but waive off, no possibility. So therefore answer would be C. Coming to question number 6, Supreme Court in EP Royappa versus State of Tamil Nadu, you can say propounded for what? Okay, now ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अंदर इन्होंने बहुत ही मजेदार तरीके से इक्वालिटी के बारे में बात करी थी. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यहाँ पे इन्होंने इक्वालिटी के जो मतलब थे उसको काफी ब्रॉड कर दिया. सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट गेव अ जजमेंट दैट वी हैव आर्टिकल नंबर 14 which is right to equality, and within that particular right if there is classification is made. ठीक है, अगर लोगों का क्लासिफिकेशन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, स्कूल में एक कंपटीशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहां पे हम बोल रहे हैं कि 8 to 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन अलग होगा और 4 to 7 स्टैंडर्ड्स के लिए कंपटीशन अलग होगा. सो दैट इज कॉल्ड रीजनेबल क्लासिफिकेशन. सो दैट मीन्स राइट टू इक्वालिटी इज रीजनेबली ब्रॉडन एंड कंसिडर्ड कि एप्पल्स आर कंपेयर्ड विथ एप्पल्स, ऑरेंजेस आर कंपेयर्ड विथ ऑरेंजेस, and there has to be a reasonable way to classify this. Okay, arbitrary classification is not acceptable, but reasonable classification is acceptable. So this is a classic example of school. So you can very well understand कि अगर हम 8 से 10 स्टैंडर्ड वाले बच्चों को compete करने की बात करेंगे कोई पर्टिकुलर competition में तो चलेगा, but अदरवाइज हम 4 to 7 स्टैंडर्ड वाले बच्चों को उसमें डालेंगे तो वो चलेगा नहीं. So this is expanding the horizons of right to equality. याद रखिएगा, this is EP Royappa versus State of Tamil Nadu. Question number 7, after which landmark judgment of Supreme Court Article 15(4) was added to the Indian Constitution? ठीक है, now this was very famous case where it is known as State of Madras versus Champakam Durai Rajan. Champakam Durai Rajan was a girl and who was interested to take up a particular job in a Madras government. ठीक है, and she was denied because she was basically of a particular caste. ठीक है, and therefore she said
that it is discriminating me on the basis of birth. ओके सो कोर्ट ने बोला बात तो सही है ना, बात तो सही है, और इसकी वजह से उन्होंने बर्थ के बेसिस के ऊपर, कास्ट के बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया। बट पूरे इंडिया में बवाल खड़ा हो गया, और इसलिए फिर गवर्नमेंट हैज टू ब्रिंग अ न्यू अमेंडमेंट एंड एडेड आर्टिकल नंबर 15(4) in the Indian Constitution, saying that there has to be a reservation on the basis of caste. Okay, so this is a landmark judgment called State of Madras versus Champakam Durai Rajan. Coming to question number 8, constitutional validity of death penalty was discussed by the court in which of the following case? Constitutional validity of death penalty matlab whether death penalty is constitutionally right or not. Okay, now here it was discussed that there is article number 21 says that right to life. Okay, but I'm sure you have heard in right to life and personal liberty, okay, it comes with some restriction. So you have right to life, but state has right to take away life. So it is by a procedure established by law or due process of law के द्वारा अगर law चाहे तो आपकी right to life आपसे छीन सकती है। ऐसा डिस्कशन हुआ था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। सो दैट इज आर्टिकल नंबर 21, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल नंबर 21। यस, ठीक है। अगर आपने आर्टिकल नंबर 21 नहीं पढ़ा हो सो मैं सजेस्ट करता हूं, प्रोटैलेंट का एक वीडियो है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, आप उसको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 says that in Mithu versus State of Punjab, which section of Indian Penal Code was declared unconstitutional? According to this particular section, अगर कोई बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है सो उसको ऑटोमेटिकली कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जाएगा, ऐसा एक पर्टिकुलर लॉ के मुताबिक था। दैट इज आर्टिकल नंबर, दैट इज सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी। ये बोलता था एनीवन हु वाज put into life imprisonment will be against provided a capital punishment, which is really not okay. ठीक है, which is really against the human rights, which is against the individual right of a person, and thereby it was made unconstitutional and it was decided in Mittu versus State of Punjab. In fact, मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट केस, और वहां पे ये जो मिट्टू करके जो भाई साहब थे उन्होंने अपनी वाइफ का मतलब एक तरीके से मर्डर किया था, ऐसा उनके ऊपर आरोप था और प्रूव हो गया था, और जिसके बाद उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था और बाद में कैपिटल पनिशमेंट की जरूरत पड़ी थी, ऐसा सरकार ने बोल दिया। ठीक है, बट देन इट वाज मेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्टिकल नंबर 303। कमिंग टू नंबर 10, पिक द ऑड वन आउट with respect to amendment to the Indian Constitution। ठीक है, अलग अलग तरीकों का अमेंडमेंट करके ये सब चीजें ऐड करी गई थी। ठीक है, बट विच वन इज ऑड वन आउट? आर्टिकल नंबर 47, आई एम श्योर यू नो, दैट रेफर्स टू डीपीएसपी। डीपीएसपी आता है आर्टिकल नंबर 36 टू you can say 51 के बीच में, so this is a DPSP, while article number 4 talks about you can say addition or creation of a state, addition or creation of a state, who has a power to do it, the power lies with the parliament। article number 239 you can say refers to addition of municipality, article number 169 you can say refers to addition of a particular area, that is panchayat ka area। so this is what basically the idea। so here it is about territory, all three are connected to territory, while article number 47 refers to DPSP and thereby it is odd one out। Coming to number 11, which of the following cannot be copyrighted work? So I'm sure you understand a word called copyright, then there is a patent, and then there is a trademark। so what is copyright? Copyright is a special work by author, by producer और by publishers और ब्रॉडकास्टर्स। ओके, उनका कोई स्पेशल वर्क है उसको कॉपीराइट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अ म्यूजिक वीडियो मेड बाय द स्कूल चिल्ड्रन, सो म्यूजिक वीडियो इज अ कॉपीराइटेड वर्क। इन्होंने अपना दिमाग लगाकर, जो भी अपना समय लगाकर एक मजेदार सा म्यूजिक बनाया होगा। ठीक है, सो दैट इज प्रीटी मच ओके। नेक्स्ट इज कॉल्ड न्यूली डेवलप्ड आर्किटेक्चर टेक्निक। रिमेंबर, दिस इज अ ट्रिकी वर्ड। आर्किटेक्चर डिजाइन होता, ठीक है,
So it would be a copyrighted work. Technique is not a copyright. Okay, process technique may fall under patent but not under copyright. So patent is available for product, okay, or a process that's an invention, while design is a copyrighted work. So टेक्निक गलत है, डिजाइन होता तो हम मान लेते, तो ये आंसर हो सकता है न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रिलीजियस टेक्स्ट, किसी ने रिलीजियस टेक्स्ट का अपनी तरीके से इंटरप्रेट किया हो और वो नया इंटरप्रिटेशन है, उस नए इंटरप्रिटेशन को अपन कॉपीराइटेड वर्क बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, एंड देयर बाय आंसर वुड बी बी. कमिंग टू नंबर 12, the principles of higher transparency and simplified procedures were laid down for company law by which particular committee? It is famously by J. Irani committee report. Okay, J. Irani committee report के द्वारा कंपनी लॉ में ट्रांसपेरेंसी और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के बारे में बातें करी गई है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मेंट बाय ज्यूर जेस्टियोनिस? ओके, दैट मीन्स an action of a nation which is on a business sense, that's a commercial acts of a nation. याद रखिएगा इस टर्म का मतलब jure gestionis, that means a commercial act of a nation. Coming to number 14, forum prorogatum. Forum prorogatum, what does it mean? It means very simple thing. A sovereign nation, that means a state, is not a party to, let's say, International Court of Justice, but for a particular case it gives its consent, and then it will say I will become a party. Since then this ICJ will be applicable, so that is conferring jurisdiction to the ICJ after the institution proceedings with the consent of a party. What kind of consent? Consent comes from the state that I accept this particular ICJ. पहले जब आईसीजे बना था तब वो उसके मेंबर नहीं थे, बट इस केस के लिए वो मेंबर बने, तो उस दिन से आईसीजे उनके ऊपर लागू पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड फोरम प्रोरोगेटम. नेक्स्ट इज कॉल्ड 15, a company is on incorporated under section 7 of Companies Act 2013. ये याद रखिएगा, ये सीधा सेक्शन है, याद रखने का था. Coming to number 16, who is the natural guardian of an adopted minor son as per the Hindu law? Remember, for a minor son who is adopted, the guardian, natural guardian would be adoptive father. Adoptive father would be natural guardian. Coming to number 17, appellate civil jurisdiction is conferred to Supreme Court by the Article 133 of Constitution of India. 133 के द्वारा सिविल जुरिस्डिक्शन में कोई भी अपील करनी हो, अगर हायर अपील करनी हो, सो उसका जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है कि नहीं? Yes, I'm sure you know Supreme Court has an original jurisdiction, then it has appellate jurisdiction, ठीक है, then it has a advisory jurisdiction. Okay, so ये उसके jurisdiction है. Coming to number 18, which of the following is not an objective for establishment of United Nation? United Nation का objective इनमें से कौन सा नहीं था? Maintenance of international peace and security is a goal of United Nation. Promotion of equality, fraternity among nations, yes. International cooperation to resolve problem, yes. Promotion of trade and commerce, that is not the objective for which United Nations was established. Coming to number 19, the principles on which United Nations is based are contained where? कहाँ पे लिखा गया है? बिल्कुल, they are written in Article 2 of UN Charter. UN Charter में Article 2 के द्वारा वो लिखा गया है. And coming to number 20, report of Mandal Commission. I'm sure you know Mandal Commission, that refers to an issue of reservation, that is reservation of ओबीसीज, ठीक है, उसके बारे में बात करी गई थी. मंडल कमीशन, वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किया था, एंड देयरबाय इट वाज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, एंड इट वाज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट बाय व्हिच पर्टिकुलर केस? इट वाज चैलेंज्ड बाय इंदिरा स्वाने केस. बहुत ही फेमस केस हुआ था अबाउट दिस रिजर्वेशन कॉल्ड इंदिरा स्वाने केस. ओके, चलिए, ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग ऑल दिस 20 क्वेश्चंस. आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड, and do not miss out to take all this thing from Pro Talent
digital.com, वहां से आपको ये पूरी की पूरी चीज मिलेगी, ठीक है। और एट द सेम टाइम डू नॉट मिस आउट टू शेयर दिस particular channel to large number of your friends. We want that this channel to be spreaded to large number of people across India. Okay, so thank you very much for doing that. Okay, all the best.